हरे कृष्णा अशोक जी। प्रभु जी आप प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा नरसिंह चैतन्य प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा Dharam Prabhu ji, Dharam Prabhu. So Prabhu, we'll wait for a few minutes. In the meantime, you can start the Radha Madhav Prabhu ji because you're still joining. Okay, okay प्रभु जी, okay प्रभु। हरे Yes, कृष्णा। Prabhu. Yes, Prabhu. Okay प्रभु जी। You can start with Radha Madhav. We'll begin because you are still joining in, Prabhu ji. Please. Okay, okay, okay प्रभु। हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राज वज्रेशोदर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर ब्रह्मानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुद्रयेत्।
हर्षप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भावद सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Just 1 second, Prabhu. Thank you, Prabhuji. हरे कृष्ण। We are very grateful to His Grace Narsimha Chandra Prabhu जी। आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको श्रीमान नरसिम्हा चंद्र प्रभु जी का संग प्राप्त होगा। So like to welcome प्रभु जी। हम सब मिलकर प्रभु जी का स्वागत करते हैं और हमें से बहुत से भक्त प्रभु से परिचित हैं, प्रभु का संग प्राप्त कर चुके हैं, पहले भी प्राप्त करते रहते हैं हर सप्ताह। प्रभु सुबह भी आते हैं मायापुर हॉल में। From Abbasia he travels all the way every morning class in the Mayapur hall, and then he goes to in the New Vrindavan hall. Wherever classes are there, we can see that how हम देख सकते हैं कि प्रभु जी कैसे उनके पास साधन नहीं है, अपना खुद का साधन, फिर भी वो किसी भी तरह भी ये इनके कारण जहाँ जहाँ पर भक्तों का संग प्राप्त करने का जो उनकी अभिलाषा है वो पूर्ण करते हैं वो। और बहुत दिनों से, कई वर्षों से वो भगवान की नित्य सेवा में श्रवण कीर्तन भक्तों के संग में युक्त हैं, पूरा परिवार। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, ऐसे वरिष्ठ भक्तों का जब सानिध्य प्राप्त होता है तो उनके अनुभव से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो उनकी वाणी के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। हम सब मिलकर के प्रभु जी का स्वागत कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेते हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं विनती करूंगा श्रीमान यशोमती प्रभु जी से, प्रभु जी हमारे साथ में है तो प्रभु जी अनुवाद करेंगे आज। प्रभु जी के अंग्रेजी भाषा का अनुवाद हिंदी में हम सबके प्रभु जी करेंगे, तो हम सब प्रभु जी का भी आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू प्रभु जी। यशोमती प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपकी सेवा में युक्त करने के लिए मैं प्रयास करूंगा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। प्लीज प्रभु जी। हरे कृष्ण। Reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 8, attaining the Supreme, sloka number 15. It is the famous verse in the Bhagavad Gita. Mamupetya punarjanma dukkalayam sasvatam napnuvandi mahatmana samsittim paramam kadi. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमां गदा। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमां गदा। Prabhuji, anybody want to repeat, please? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। Word by word meaning: Mom, me, uvetya, achieving, puna, again, janma, birth, dukkha, alayam, place of miseries, asaswadam, temporary, na, never, apnuvanti, attain, mahatmanaha, the great souls, samsittim, perfection, paramam, ultimate, kada, having achieved. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. After attaining me, translation, after attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. Purport: since the temporary material world is full of miseries of birth, old age, disease, and death, naturally, he who achieves the highest perfection
and attains the supreme planet, Krishna Loka, Goloka Vrindavana, does not wish to return. The supreme planet is described in Vedic literature as Avyakta and Akshara and Paramakali. In other words, the planet is beyond our material vision and it is inexplicable, but it is the highest goal, the destination for the Mahatma's great soul. The Mahatmas receive transcendental messages from realized devotees and thus gradually develop devotional service in Krishna consciousness and become so absorbed in transcendental service that they no longer desire elevation to any of the material planets, nor do they even want to be transferred to any spiritual planet. They only want Krishna and Krishna's association and nothing else. That is the highest perfection of life. This verse specifically mentioned the personalist devotee of the Lord, Supreme Lord, Krishna. These devotees in Krishna consciousness achieve the highest perfection of life. In other words, they are the supreme souls. Hare Krishna. जी हिंदी यस यस हिंदी में हिंदी में अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाय। अनुवाद। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तात्पर्य। चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त, अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि नहीं वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भूवकलामयं ददाति सुखदान्तिकम्। वन्देकं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगनललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनी श्रीवृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णाय बुधे श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने नमो ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। Hare Krishna, I welcome all the devotees. Saturday evening Srimad Bhagavad Gita as it is class.
तो मैं सभी वैष्णवों का स्वागत करता हूँ शनिवार संध्या की भगवत गीता की कक्षा में। Please accept all the Vaishnavas my humble obeisance, lotus feet. Please bless me to do this seva in a correct mode. प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं सभी वैष्णव के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि मैं सही रूप से ये सेवा कर सकूं। I am not qualified to discuss this Bhagavad Gita. When I am reading, I feel this how to do this, because it is all too much philosophical things. So I feel it is very tough. So I again request all the devotees, please bless me to do the service. Please forgive me any offenses in this service. प्रभु जी कह रहे हैं कि ये विषय बहुत उच्च है और इसको देखकर मुझे लग रहा है कि मैं कैसे इस सेवा को कर पाऊंगा। तो वापस मैं सभी भक्तों से ये आशीर्वाद की याचना कर रहा हूँ और सबसे क्षमा याचना चाहता हूँ यदि कहीं पे मेरे से कोई कमी रह जाए। Now I also thank giving me the opportunity to I accept this service or my own purification. तो मुझे जो सेवा दी गई है इसे मैं अपनी शुद्धि के लिए इसको ग्रहण कर रहा हूँ। Hare Krishna, thank you very much. The Bhagavad Gita is known as Gita Upanishad. भगवद गीता को गीतोपनिषद कहा गया है। It is the essence of Vedic knowledge and one of the most important Upanishad in Vedic literature. ये वैदिक जो शिक्षा है उसका ये सार है और सारे जो वैदिक उपनिषद हैं उनकी ये सार रूप में शिक्षा है। It was spoken by the Lord Sri Krishna to Arjuna in the battlefield of Kurukshetra. तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा ये भगवत गीता अर्जुन को कही गई। The aim and the purpose of Bhagavad Gita is to deliver the mankind from the nuisance of material existence. तो इस भगवत गीता का उद्देश्य इस जन्म मृत्यु के चक्र से जीवों को मुक्त करना है। Unless one read the Bhagavad Gita in a sub-depraved and through the disciplic section, it is very difficult to understand because it is a great mystery. तो ये बहुत बड़ा रहस्य है। तो जब तक कोई भी जो परंपरा है उस परंपरा में यदि कोई इस शिक्षा को ग्रहण नहीं करता है तो इसको समझ पाना बहुत कठिन है। So in this chapter today, they are attaining the Supreme, the ultimate destination of all the conditioned fallen souls. तो ये जो अध्याय है इसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति और सभी जो पतित जीव आत्माएं हैं उनका जो चरम उनका गंतव्य है उसके बारे में चर्चा है। Generally, the devotees are categorized in impersonal and personal form. साधारणतया भक्तों को दो भागों में बांटा गया है, एक साकारवादी हैं और एक निराकारवादी। In this sloka mainly mentioned the personalist. और इस श्लोक में जो सगुणवादी हैं उनके बारे में चर्चा हुई है। In the Bhagavatam, it is said the sloka 1 to 11, the Vadanti Tattvavidas Tattva Manyanam Advayam Brahmedi Paramatmedi Bhagavanedi. Bhagavan is realized in three phases, namely Brahman, Paramatma, and Bhagavan.
तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 2 में श्लोक 11 उसमें बताया गया कि परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी या तत्ववेद इस अद्वय तत्व को ब्रह्म परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। From this we can understand the first step in spiritual realization is Brahman, which leads one towards the impersonalism. तो इस परिप्रेक्ष्य से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन का जो पहला कदम है, पहला स्तर है, तो वो जो निर्गुणवादी जो भगवान का जो समझ है वो वहां से प्रारंभ होता है। The impersonalists simply sit and chant the pranama mantra, Omkara, and renounce all activities. तो जो निर्गुणवादी होते हैं वो बस ओंकार का जो मंत्र है उसका उच्चारण करते हैं और जो कुछ भी करणीय जो कार्य होते हैं उसका वो त्याग करते हैं। After quitting this body, material body, the impersonalist goes to the merge in the Brahma Jyoti, which is called Shayuja Mukti. जो निराकारवादी होते हैं इस वर्तमान शरीर को त्याग करने के बाद में वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं और जिसे सायुज्य मुक्ति कहा गया है। The Bhagavad Gita, Lord says in the 14.7, Brahmano hi pradisthaham. I am the basis of impersonal Brahman. तो भगवान भगवद गीता के 14वें अध्याय में श्लोक 7 में कहते हैं कि जो 27. 14:27 Prabhuji. 14:27. Okay, just a minute, I will just see that, then I can translate exactly. तो ये अध्याय 14 का श्लोक 27 है। इसमें बताया कि और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। So we can understand this impersonal Brahman is the glowing effulgence of the Supreme Personality of Godhead. तो हम लोग इसे ये समझ सकते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति है ये भगवान का जो द्वैदीप्यमान जो शरीर है उसकी ही कांति है। The soul is always active and it cannot be idle for a long time in a Brahma Jyoti. So again it falls down to the material world. तो जो जीव है वो क्योंकि वो चेतन है इसके लिए वो लंबे समय तक वो बिना किसी क्रिया के नहीं रह सकता है और इस प्रकार से उसका वापस पतन होता है। So when one is further advanced from Brahman realization, he can understand that there are activities in spiritual life and that these activities constitute a devotional service. तो यदि कोई इससे थोड़ा आगे प्रगति करता है तो वो फिर समझता है कि जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें आगे भी और विषय हैं और वो भगवान की जो भक्ति है उसमें वो युक्त हो सकता है। The Bhagavad Gita 7.19 says, Bahunam janmanam ande jnanaman mam prapatyede Vasudeva Sarvamidhi Samahatma Sudurlabha. This stage is obtained after many births and deaths. One who comes this stage, Vasudeva Sarvamidhi, cause of all causes, is a great soul and he is where to obtain this stage. They are called Mahatmas. तो इसी भगवद गीता में 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया गया कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है यह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है
ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। See in the 9th chapter, 13th sloka, it says, Mahatmanastu mam partha Taivim prakarim ashridaha bhajandi ananya manaso jnatva bodhadi avyaya. That means those who are not deluded, the great souls are under the protection of divine nature. They are fully engaged in the devotional service of the Supreme Personality of Godhead, who is origin of everything. तो ये 9वें अध्याय, भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्लोक 13 में बताया गया कि हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। One who surrender to the Supreme Personality of Godhead at once become freed from the control of material nature. तो जो कोई भी भगवान का आश्रित हो जाता है, तो वो जो भौतिक प्रकृति है उसके प्रभाव से मुक्त हो जाता है। Such a Mahatma does not divert his attention to anything outside Krishna. तो ऐसे जो महात्मा है वो भगवान श्री कृष्ण के अलावा उनका जो चेतना होती है उसको कहीं और वो परिवर्तित नहीं करते। They don't want even transfer to any other material planet or the spiritual planet. तो वो कोई भी भौतिक जगत या कोई भी अन्य आध्यात्मिक जगत उसकी भी अपेक्षा नहीं करते हैं। They only want Krishna and Krishna's association. वो मात्र भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण का ही संग चाहते हैं। So the highest destination of the Mahatmas are Krishna Loka or Goloka Vrindavan. जो भी ऐसे महात्मा हैं, उनकी जो परम जो प्राप्ति उनको हो या जो उनकी परम सिद्धि है, वो भगवान का परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है। The supreme planet is described in Vedic literature as Avyakta, Akshara and Parama Kadi. तो इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त, अक्षर तथा परमागति कहा गया। Prabhuji, your video is off, Prabhuji, if you can. Yeah, Prabhuji, I am in the now coming, Prabhuji. Yeah, yes. Avyakta means the spiritual world is beyond our material vision. It is situated beyond our material vision. तो अव्यक्त का अर्थ है कि ये हमारी जो भौतिक दृष्टि है उसके ये परे है। Akshara means we can't explain the opulence of the planet with our mundane knowledge. और अक्षर का अर्थ है अवर्णनीय, अवर्णनीय, जिसका अर्थ है कि हम लोग हमारी जो भौतिक समझ है उसके द्वारा हम लोग ये जो दिव्य स्थान है इसकी हम लोग कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में नहीं बता सकते। Parama Kadi means it is the, even though we don't know about this by our own our endeavor, we can understand this through the Shastra, and it is the highest destination of the Mahatma. तो जो परमागति है उसको ये महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति में विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में युक्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो परम स्थान है उसके बारे में, ये परमागति के बारे में बताया गया है। Once they went there, they will not willing to come back in this material world again, which is full of miseries
of birth, old age, disease, and death. जिसको एक बार वो स्थान प्राप्त हो जाता है तो वो कभी भी इस कष्टमय जो स्थान है इसमें आने की इच्छा कभी भी व्यक्त नहीं करते हैं, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये कष्ट सदैव बने हुए हैं. But general mass of people not aware of this intersection of Vedic knowledge. लेकिन ज्यादातर जो जीव हैं मनुष्य योनि में, तो वो भगवान के इस दिव्य जो स्थान है उसके बारे में वो अनजान है, उनको ज्ञात नहीं है इसके बारे में. So on this matter should be discussed in public, that how the living entity suffering in due to the birth, old age, disease and death, so that they can understand this and try to come in the spiritual life. तो इसके लिए इन विषयों की चर्चा जन सामान्य के बीच में होनी चाहिए, जिससे कि वो इस जो स्थान है इसमें किस प्रकार की जो यहाँ पे समस्याएं हैं उसके समझ करके और वो फिर आध्यात्मिक जीवन में प्रगत हो सके. This birth, old age, disease and death, it is a common from problem of all the living entities, all the living beings in this world, from Brahma to the small ant. तो ये चींटी ब्रह्मा जी से लेके चींटी तक जितने भी जो जीव हैं सबके साथ में ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि की समस्या एक समान है. So Lord Kapaladev in the that kind of Srimad Bhagavatam explains how this the birth, death, especially in the birth, in the womb of mother, how the living being suffers. Explain. तो भगवान कपिल देव वो श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से जो जीव आत्मा है वो माता के गर्भ में उसको कष्ट प्राप्त होता है. Generally, everyone wants to take birth, but they don't want old age, disease and death. तो साधारणतया लोग जन्म को तो सही मानते हैं, लेकिन कोई भी नहीं चाहता है कि उनको जो बुढ़ापा है, वृद्धावस्था और रोग और मृत्यु की प्राप्ति. Only we are celebrating birth day, not other things, old age or disease or death days, something like that. तो सभी लोग साधारणतया वो जन्मदिन को तो वो मनाते हैं, लेकिन जो वृद्धावस्था की अवस्था है उसको या फिर जो रोग है या जो मृत्यु होती है उसको कोई नहीं मनाना चाहता है. So nobody wants these problems, but who are take this material body sure to face all this old age, disease and death. तो कोई भी व्यक्ति वो इन कष्टों को नहीं चाहता है, लेकिन ये निश्चित है जिस किसी को भी ये भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है उनको ये कष्ट मिलते ही हैं. Lord Kapaladev explains in the Bhagavad Gita that the living entity in the womb of a mother, it is tightly packed for nearly 9 months. There is no freedom of movement, just like a bird in the cage. तो भगवान कपिल वो श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में बताते हैं कि 9 महीने तक जब जो जीव है वो माता के गर्भ में रहता है, तो वो एक बिल्कुल ऐसे स्थान में रहते हैं जहां पर कि उसको हिलने डुलने की भी जगह नहीं होती है, और वो उसी प्रकार से बंद रहता है जैसे एक पक्षी वो पिंजरे में बंद रहता है. So the worm in the womb
biting the tender skin of the child. और जो गर्भ में जैसे जो कीटाणु होते हैं, तो जो कोमल त्वचा होती है उस शिशु की, वो उसको काटते रहते हैं. Imagine this child condition when it is in the womb of mother. तो हम लोग समझ सकते हैं कि उस शिशु की क्या अवस्था रहती है माता के गर्भ में. And also when the mother eats bitter or spicy foodstuff or too salty or sour foodstuff, it affects the body of the child. और उस गर्भ के समय में माता यदि कोई तीखा, खट्टा या जो भी कुछ भोजन ग्रहण करती है, उसका प्रभाव उस शिशु की त्वचा पर होता है. In this condition, in the womb, the child moves here and there when it comes after 7 months, but it suffers how to come out of this womb. But whereas the mother is enjoying, my child is moving here and there like this. तो विशेषकर जो 7वां महीना होता है, उसके बाद में वो बच्चा इस प्रकार की जो समस्या है उसके कारण वो इधर उधर घूमता है. वो ऐसे उस से मुक्त होना चाहता है कि कैसे वो उससे इस समस्या से बाहर आए. तो वो कष्ट हो रहा होता है, लेकिन जो माता होती है उसको नहीं ज्ञात होता, और वो बहुत प्रसन्न होती है कि मेरा जो बच्चा अभी वो इधर उधर अभी घूम रहा है. So it feels the pains in the womb of the mother. It is due to the sinful activities done by the past karma. So it was caged in this womb of mother. तो पिछले हमारे कर्मों के कारण में उस जीव आत्मा को किसी माता के, नई माता के गर्भ में उसको स्थान दिया जाता है, और जहां पर कि वो कष्ट की प्राप्ति उसको होती है. So there another it is said, the fortunate souls can remember the past 100 births of this activities, karmas, which is done. It will come, it can remember during that time. जो कोई भाग्यशाली ऐसी जीव आत्माएं होती हैं, तो ऐसा बताया गया कि उनको पिछले 100 जन्मों के कर्मों का स्मरण रहता है. So that because of this, it tries to praise to the Paramatma, which is situated in the heart of the living entity. It will not do the same sinful activities which cause us to take birth again and again in this material world. तो वो ऐसी जो जीव आत्माएं होती हैं, तो वो जो परमात्मा हमारे हृदय में विद्यमान है, उनसे वो प्रार्थना करता है कि आगे वो किसी भी प्रकार के जो पापपूर्ण कृत्य हैं वो उसमें युक्त नहीं होगा. तो वो इस प्रकार से इन कष्टों से वो मुक्त होने के लिए प्रार्थना करता है. Similarly, in the old age, we can face problem, the loss of memory, loss of strength, both mental and physical, and the lamentation due to loss of teeth, hair, or vision, or hearing something. तो उसी प्रकार से वृद्धावस्था में हमको स्मृति चली जाती है, और सारे जो वृद्धावस्था के कष्ट हैं तो वो जीव को प्राप्त होते हैं, कष्ट की प्राप्ति होती है. And finally, death is a big problem for the materialistic people. और जो भौतिकतावादी लोग हैं, तो मृत्यु उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है. Because one stroke, everything, all the accumulation, the material world and other things gone. क्योंकि एक ही झटके में जो कुछ भी उन्होंने पूरा जो जीवन भर एकत्रित किया है, चाहे उनकी संपत्ति हो या
कुछ भी जिसे वो अपना मानते हो वो तुरंत करके उनसे दूर हो जाता है। It is said in that Shastra that pain during the death time, when soul leaving the body, it is just like 40,000 around scorpion stinging at one time. That much of pain is feel by the body. तो शास्त्रों में वर्णन है कि शरीर छोड़ने के समय में जब जीवात्मा शरीर का त्याग करती है तो उसको जो कष्ट मिलता है वो 40,000 जो बिच्छू हैं उनके एक साथ डंक मारने से जो कष्ट होता है उतना कष्ट उसको उस समय अनुभूति होती है। So unfortunately, when we born in this material world, the living entity born in this material world, as soon as take birth, it forgets this identity because of the celebration of birth by the relatives. दुर्भाग्यवश जो जीव वो माता के गर्भ में इतना कष्ट अनुभव करता है, प्रार्थना करता है, जन्म लेने के बाद में वो उसे भूल जाता है। उसका कारण है क्योंकि जो संबंधी हैं, परिजन हैं, वो उसके जन्म का जो ऐसे जो खुशियां हैं उसको मनाते हैं, उसको वो इस प्रकार से संसार में दृष्टिकोण जो पूरा बदल जाता है तो वो भी उसको भूल जाता है अपने कष्टों। Due to the attraction of external energy, Maya, the living entity forgets its real identity as a spirit soul. तो बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण में जो जीव है वो अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसको वो विभ्रम हो जाता है, उसको वो भूल जाता है। This Kunti Maharani prays in the Srimad Bhagavatam sloka number 26, Janma Aishwarya Shrudha Srivir Yedamana Mada Bhoma. That means the living entities who are who are attained this beautiful body and taking birth in a respected family and with great opulence and good education, they all makes the living entity forgetful of the spiritual realization. तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का अध्याय 8 जिसमें कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, तो 26वें श्लोक में कुंती महारानी वो प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन हैं, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वो आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। So because of this Maya's prabhav, the living entities suffering. तो माया के प्रभाव के कारण में जो जीव आत्मा है वो कष्ट प्राप्त कर रही है। So all the materialistic men mad after possessing these materialistic opulence. तो जो भौतिकतावादी लोग हैं वो मद रहते हैं, जो भौतिक जो भी उनको उनकी इच्छाएं होती हैं उसके अनुसार जो भी भौतिक चीजें हैं उनको प्राप्त करने के लिए। They think this is the advancement of human civilization. वो सोचें कि मनुष्य समाज की यही प्रगति है। One who intoxicated by the material opulence cannot understand the thing as it is because it is covered by the illusion of Maya. तो जो भौतिकतावादी जो विचार होते हैं, ऐसी भावनाएं होती हैं, उसके कारण में वो इस संसार का जो भ्रम है या कष्ट है वो उसको नहीं देख पाता।
Bhagavad Gita in the second chapter 41st sloka says Boha Aishwarya Prasaktanam Daya Bhakrada Sedasam Yavasatima Buddhi Samadhi Navidyadi. Those who are too attached sense enjoyment and material opulence cannot engage the mind in the devotional service sincerely. तो ये भगवत गीता में ही द्वितीय अध्याय में श्लोक संख्या 44 में कहा गया कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। So a helpless man can feelingly utter the holy name of the Lord. तो जो असहाय व्यक्ति होता है वो भगवान के नाम का जो उच्चारण है उसको कर सकता है। Whereas the man who has materially advanced cannot utter the holy name with a sincere feeling. लेकिन जो भौतिक दृष्टि से प्रगत है भौतिक ऐश्वर्यों में, तो वो इस भगवान के नाम का उच्चारण नहीं कर सकता। This is all the mercy of Sri Guru and Gauranga according to our surrender. तो गुरु और गौरांग की कृपा से हमारी शरणागति के अनुरूप ही ये कृपा हमको प्राप्त होती है कि कोई इस नाम का उच्चारण कर पाता है। Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu celebrated as a magnanimous avatar. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को महावदन्याय अवतार बताया गया है। One who comes to deliver the fallen souls in the material world without any weapon, only the chanting of the holy name Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. तो जो बिना किसी शस्त्र के खाली इस हरि नाम के द्वारा सभी बद्ध जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए आए हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने ये महामंत्र हमको दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। By chanting the holy name of the Lord and associating with the devotees and reading Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, we can attain the highest perfection in the spiritual realization. तो जो आध्यात्मिक जो हमारी अनुभूति है उसमें जप के द्वारा, भक्तों का संग के द्वारा, और जो आध्यात्मिक हमारे शास्त्र हैं उनकी समझ से जो परम स्थिति है उसको प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी यहाँ पर विराम दे रहे हैं उनकी कथा को। तो अभी हमारे पास समय है, यदि किसी भक्त की कोई जिज्ञासा है तो अपना हाथ देंगे तो हम उनको अनम्यूट करेंगे और वो अपना प्रश्न कर सकते हैं। प्रभु जी, want anybody, you and brothers want to add something, please? Prabhu ji, I will say only little in my little knowledge. No, thank you so much Prabhu ji. Thank you Prabhu ji. You covered the whole purport, so you already discussed the purport Prabhu ji. So first we will see if devotee is having any questions, so we can take those questions because we have sufficient time for the question answers. Yes. तो मेरा अनुरोध है भक्तों से, यदि किसी की कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप हाथ देंगे तो हम लोग आपको अनम्यूट करेंगे। तो हमारे पास अभी अच्छा समय है, अवसर है।
हरे कृष्णा ब्रजपाल प्रभु जी, आप आपके पास में अवसर है प्रभु जी, कुछ चर्चा आप करना चाहेंगे प्रभु? Prabhuji, I have one question. It is said in the Srimad Bhagavad, that canto number the Kavaladev. Fortunate soul get the chances of realizing the past 100 births. It is only for this what we call it Bhakunan Janmanan, the highly elevated souls, or all souls. Like you mentioned, Prabhuji, fortunate souls means they will be fortunate, means we cannot again think of the materialistic people. They are fortunate. Definitely, they are the most unfortunate, right, Prabhuji? So, if here the term is used as fortunate, it means they must have the utmost mercy of Lord Shri Krishna. So in this context, we can understand they only will be the fortunate souls, and for them only this will be possible by the mercy of the Lord. So they can remember that. As we are understanding, like we understand about Bharat Maharaj, or we understand about Gajendra, like these devotees, because of their devotion only. It is mentioned because of the devotion. Although they were in the lower species, in a animal body, but because of the Lord's arrangement, they could remember that. So the same way we can understand here, Prabhuji. I will like if Prasad Prabhuji is there, if Prabhuji also can add. The translation itself, it is said fortunate souls. That means Yes, highly yes. elevated souls. When taking Yes, birth, yes, Prabhuji. Fortunate means definitely here will be about the pure devotees only. Yeah, okay. Thank you. तो यहाँ पर प्रभु जी ये बता रहे हैं कि उन्होंने जब भागवतम में ये पढ़ा कि जो भाग्यशाली जीव आत्माएं हैं, तो उनका प्रश्न था कि भाग्यशाली हम लोग किसको माने। तो यदि यहाँ पर हम लोग आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी कहा जा रहा, तो निश्चित रूप से उनको ही हम लोग ऐसी जो पुण्य जीव आत्माएं हैं मानेंगे, या भाग्यशाली जीव आत्माएं मानेंगे, जिनके ऊपर में भगवान की ऐसी कृपा है। जैसे हम लोग भरत महाराज, जैसे वो जड़ भरत, या उनको जो हिरण का शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से उनको उनके पिछले जन्मों का सब कुछ स्मरण था, और इसीलिए वो तुरंत करके वापस वो भगवान की सेवा में वो युक्त हो सके। तो ऐसे कई उदाहरण हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं कि उनकी जो भक्ति की हुई है, तो जो भी भक्ति हम लोग जीवन में जितना करते हैं, तो वो कभी क्षय नहीं होती है। और हमारी जो भी भक्ति का जो भी स्तर है, उसके अनुरूप भगवान उस जीवात्मा के साथ में वो ऐसी जो कृपा है उसको देते हैं, जिससे कि वो वापस भगवान की सेवा में युक्त हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रभु जी बता रहे हैं कि इस शब्द के बारे में हम लोग समझ सकते हैं कि ये भाग्यशाली कौन है। So there is a one question, I think, Prabhuji, one devotee. I will unmute him. Okay. Yes, युगल केशवर प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। युगल किशोर प्रभु, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। Maybe Prabhu he doesn't know how to unmute, or yeah, I'm just allowing him to unmute now. Basanta Prabhuji is host, so Prabhu only can try to unmute him.
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। बोले बोले। हरे कृष्णा। सब भक्तों धर्म। प्रभु जी आपका आवाज कट के आ रहा है। हरे कृष्णा। Their voice is हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बोलिए प्रभु जी, आप बोलिए प्रभु जी, आपका आवाज साफ नहीं है, फिर भी आप बोलिए। जी जी, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ प्रभु, नेटवर्क नहीं है यहाँ पर। प्रभु जी, मैं audio is not clear. His प्रभु जी audio आपकी maybe आवाज net. बिल्कुल भी साफ नहीं है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। Prabhuji, if you hear, you can. यस प्रभु जी। You hear clearly, Prabhuji? No, no, I could not hear him at all, Prabhu ji. I could not understand what he said. Okay. And I me think also now he is not there. I think he is disconnected even. maybe line. Yeah, his network is not proper, I think. तो और किसी भक्त की कोई जिज्ञासा है या कोई भक्त यहाँ पर कुछ जोड़ना चाहते हैं? Yesterday we heard the same verse from Nam Avatar Prabhuji. So Nam Avatar Prabhuji, you will like to add something from your realization yesterday, which you shared in New Vrindavan Hall. Hari Bol. Hare Krishna. Welcome, Namah Prabhuji. Dhanotnam. So if you, I will unmute Nam Avatar Prabhu. Okay, Prabhuji. So there are no questions further. Okay. One question came so that the voice is not clear. Okay. Yeah. So we'll Prabhuji, conclude another here. thing. Hare Krishna. Prabhuji, in this purport, Yes. in English I read, it is the last word. Yeah. In other words, they are the supreme souls. The highest Mahatma. Supreme souls means Actually, in our concept, Prabhuji, in our Sampradaya concept, all soul are same. Soul are same. But still we can categorize them based on their relation with the Lord, how deep they are in their devotion. So that only we can say, because of ultimately the success of the human birth or for the soul is if he reaches to his that stage where like his swarupa jiver swarupa hai krishna nitya das. So if someone is situated in there, and if who is how progressed in this path, so they will be the topmost soul. So that is what here I think Srila Prabhupada mentioned want to supreme indicate. soul. Yes, Prabhu. Because before that if we read, so it is ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं. And then for that only I think he is telling in other words, they are the supreme soul, right? Soul. So like Srila Prabhupada is telling about those devotees who achieved their param siddhi in the devotional path. Oh, okay. Yes, sir. Thank you so much, Prabhu. Right. So thank you so much, Prabhuji. So I will request all the devotees. Prabhuji always he speaks in very short, very concise, means like प्रभुजी सार रूप में बताते हैं, समय बहुत कम ले करके, और पूरा जो तात्पर्य है और इस विषय का जो भी समझ है उसको वो बहुत संक्षेप में भगवत गीता के ही कई श्लोकों को नहीं प्रभु जी ने बहुत सारे श्लोकों का वर्णन यहाँ पर किया,
भगवद गीता में जो इस विषय से संबंधित हैं कई अध्यायों से, और भागवतम से जो उन्होंने जैसे इस श्लोक का जो तात्पर्य है उसमें जन्म जरा तथा मृत्यु का क्लेश इसके बारे में चर्चा हुई, तो उसका वर्णन प्रभु जी ने जो भगवान कपिल देव वो भागवतम में बता रहे हैं, वहां से उन्होंने वर्णित किया कि कैसे जन्म भी अपने आप में कष्ट है। साधारणतया जो रोग है या वृद्धावस्था या मृत्यु वो तो कष्ट के रूप में सबको दिखाई देता है, लेकिन जन्म वो किसी को कष्ट नहीं लगता है। लेकिन जो जन्म है वो अपने आप में कितना बड़ा कष्ट है इसका भी वर्णन श्रीमद् भागवतम में भगवान कपिल वो बता रहे हैं। But again, Prabhuji, I am just recollecting. Even the birth is such a miserable, the situation for the soul. But if we again recall Sukdev Goswami, even he stayed there for 16 years, and he was bearing that pain. But he, for in his understanding, he said the pain or the difficulty in this material world will be much more than that. Yes, yes. Right, Right. Prabhuji? But Yes. as you said, means the soul he is praying there, and somehow when the time comes, he takes birth. But after that, how he is deviated means by the surroundings. He Yes. just deviates from that. His prayers or his pain he forgets. So it means he was in pain when he was in a womb, and then here he came even multiple times. That pain is increased, but we are not that also understanding. Yes. Yes. Because of that is how Sukhdev Goswami he was telling, no, I for me this pain is still not a pain, but the pain which I will feel here after coming to this material world will be multiple time more than that. So he didn't want to come, but we are very happy here. Yes. Yes. So these are all just I recollected that, Prabhuji, as you mentioned. तो यहाँ पे प्रभु जी ने जो जन्म का जो कष्ट है उसको बताया, लेकिन हम लोग देखें तो जन्म का कष्ट सुखदेव गोस्वामी उन्होंने उस कष्ट को 16 वर्ष तक सहन किया, और वो उनकी उनकी जो सोच थी, उन्होंने कहा कि उससे बड़ा कष्ट इस भौतिक जगत में हमको प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग जैसे जो कम से कम मनुष्य वो 9 महीने वो माता के गर्भ में रहता है, तो वहां पर उसको कष्ट होता है, बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, यहाँ पर आता है और यहाँ पे आके उसको ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जाता है कि वो धीरे धीरे करके इस संसार में अपने आप को देखता है कि वो बहुत प्रसन्न है, वो खुश है यहाँ पर में। तो उसको जितना कष्ट उस माता के गर्भ में हुआ उससे ज्यादा यहाँ पे उसको मिल रहा है, लेकिन वो उसको भी नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि उसके जो आसपास में पूरा इस संसार का जो मोह है वो मोह उसको इस प्रकार से भुला देता है। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। तो मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ, हम लोग एक बार हरि नाम प्रभु का आश्रय लेते हुए हम लोग जो महामंत्र है उसका उच्चारण करेंगे, प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, और हम लोग प्रभु जी, बिफोर दैट वी विल glorify the Lord like Caitanya. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu, Sri Advaita Acharya, and devotees of all the Vaishnava devotees. Hare Krishna. हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, यस, नाम प्रभु का उच्चारण करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त की जय, भगवद गीता यथारूप की जय।
Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you for giving Thank them you so also. much, Please Prabhuji. forgive me Thank any you. offenses. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji, for such a nice, very packed and wonderful class, Prabhuji. Hare Krishna. With, Hare Krishna. with my small little knowledge, I tried my level. So nice, Prabhuji. Hare So nice, Krishna. Prabhuji. Thank you. Thank you. Hare Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण जी। ब्रेकफास्ट प्रभु जी। प्रभु तो बाकी लोग अभी जिससे बताया था ना कि वो 8:15 पे आएंगे प्रभु जी। ओके, तो अभी हम लोग इससे एग्जिट हों और फिर वापस जुड़ेंगे, कैसे करना है? ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन फिर उनको बोलना पड़ेगा ना, बसंत प्रभु जी को बोलना पड़ेगा फिर से। अभी तो वो नहीं है वो। हाँ, अभी वो नहीं है। या तो आप जुड़े रहिए, ऐसे ओके। भी ऑन रहेगा, बाकी लोग को बोलते हैं कि वो लोग छोड़ सकते हैं। ओके ओके बाबा, तो हम लोग यहाँ पर विराम दे रहे हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे कुछ और सेवा के लिए। तो अन्य भक्तों से अनुरोध है कि कृपया आप लोग अभी यहाँ से आप नहीं, इसको छोड़ सकते हैं अभी। ये जो जूम है, तो हम लोग फिर जो दूसरी सेवा है उसको हम लोग उसमें आगे उस सेवा को करेंगे। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। Without number. प्रभु जी मैं एक बार इनको फोन करके फिर वापस जोड़ता हूँ प्रभु, रसिकन प्रभु जी को फोन करके। यस, मैं हूँ इसमें प्रभु जी। तो बाकी भक्त अभी धीरे धीरे करके निकल रहे हैं, तो भक्त लोग निकल जाएंगे तो हम लोग। यस। थैंक यू प्रभु जी। तो अन्य भक्तों से अनुरोध है कि कृपया आप अभी इस जूम से आप एग्जिट हो जाइए। तो भक्त लोग कहीं पे मोबाइल रखे कहीं और रहते हैं, किसी को जो सूचना है वो नहीं मिल रही है। हरे कृष्णा, द्वारा प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं भक्तों से कई बार मैंने अनुरोध कर दिया प्रभु, लेकिन अभी भी भक्त लोग तो बाकी लोग रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु जी देखिए अभी ना, अभी जो ये प्रभु जी हैं अपने रसिकन प्रभु जी, आई विल जस्ट गिव द बैकग्राउंड प्रभु, लिटिल बैकग्राउंड कि मीटिंग किसके लिए है। मैंने आपसे बताया था थोड़ा सा ब्रीफ में। तो प्रभु जी ना उसमें जो एक मिड लाइफ करके वहां पे मैक्स का है, उसमें अभी प्रभु ने उनके थ्रू पता किया है कि कुछ अच्छी स्कीम्स है वहां पर जो हमारे कैंप के भक्तों के लिए काम में आ सकती है। जैसे कि कुछ उनके आगे के भविष्य के लिए, उनके बच्चों के लिए कुछ छोटी छोटी जो अभी से सेविंग करना शुरू करेंगे तो उनको अच्छा खासा रिटर्न फिर मिल। तो इसीलिए प्रभु ने कहा था कि एक दिन हम लोग कर पाएंगे। तो चूंकि मैं सोचा कि ठीक है, आज क्लास के बाद कुछ भक्त रहेंगे भी और हम लोग एक बार विचार कर लेंगे और फिर हम लोग फिर उनके साथ बैठ करके उनको बता पाएंगे, जैसे कि कुछ बहुत छोटी छोटी अमाउंट के साथ में ही, जैसे कि उनके अगर जो बच्चे हैं, तो अगर बच्चियां हैं तो उनकी शादी के लिए, या बच्चे हैं तो उनके कुछ और अगर कुछ धन की आवश्यकता जो होती है तो वो अभी से प्लान कर सकते हैं।
तो इसके लिए प्रभु जी रसिकन प्रभु जी भी हैं साथ में, वो बताएंगे हमें थोड़ा सा, और उनके कुछ कॉलीग भी हैं जो ये उस कंपनी के साथ में है। राइट प्रभु, रसिकन प्रभु जी? हाँ, यस प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। कैसे हैं आप? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बस आशीर्वाद है प्रभु जी, आपका हरे आशीर्वाद है कृष्णा, प्रभु जी। प्रणाम। आशीर्वाद। आप लोग तो शुद्ध भक्त लोग हैं प्रभु, हम लोग तो इधर ऐसा है प्रभु जी, कर्म कानों का में काम तो करके जैसे, बैठे हैं। कानों में ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ एकदम ऐसी चीज सुनाई दे रही है जो कभी आज तक सुना नहीं है, जिसके बारे में पता नहीं है प्रभु जी। मेरे को तो समझ में नहीं आया प्रभु, आपने क्या बोला। कैसे हैं प्रभु? बच्चे लोग कैसे हैं और माता जी? सब आशीर्वाद है प्रभु जी, आप जैसे वैष्णव का प्रभु जी चल रहा। अभी थोड़ी देर में हम लोग ज्वाइन करेंगे प्रभु, मैं बात कर चुका हूँ। जस्ट वेटिंग फॉर देयर पार्टिसिपेशन। तो पता नहीं वो लोग में हिंदी में तो बोलने वाला है। नो प्रॉब्लम प्रभु जी, इफ रिक्वायर्ड पता देन नहीं उनका हिंदी कैसा है हमको मालूम नहीं है, बट दे ट्राई टू कम्युनिकेट। इन केस इट इज रिक्वायर्ड यू कैन ट्रांसलेट और समथिंग। यस प्रभु जी इज देयर। विश्वास प्रभु जी इज आवर हम लोग समझ हिंदी ट्रांसलेटर प्रभु जी। मेरे ख्याल से हम लोग को बहुत अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं होगी, हम लोग समझ लेंगे पहले उनसे। राइट प्रभु जी, हम लोग को समझ लेंगे। I think some of them are joined प्रभु। Okay. I think so. Solomon has joined. Good evening, Solomon. How are you? I think we have to allow them to unmute, right? I think so, yes. Can we make them also co-host, Prabhuji? Yes, Prabhu. Yes, then they can speak. Yeah. Okay. So, Rasikan Prabhuji, you please tell us so we can make whoever you want. There is there is one Mr. Solomon. Yeah, that I make him co-host. Yeah, and then Sarida. What is the name? Sarida. Yes, Sarida. Sarida. Okay. Yeah. Then Mr. Solomon. We have Mr. Sudarshan, sir. He's our NRI manager. Mr. Sudarshan. Sudarshan, huh? Yeah. Prabhuji, Sudarshan. 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 Yes. That only? Yes. Yes, Prabhu. That's all. Sudarshan, yeah. Okay. Okay, Prabhu. I just give us just small introduction. Good evening. सभी भक्त लोगों को मेरा दंडवत प्रणाम। यहाँ पे जो है मिस्टर सोलोमन is Prabhuji, Mr. Solomon, am I correct that you are the branch manager of the? Yes, sir. You are right. Yeah. Then Sarita is the what is this one, Prabhu? Mr. Solomon? Sarita is the business development manager. Development manager, yeah. And Sudarshan is Susarla is the NRI. Is looking after the NRI development. Correct. You are right. So welcome to this group, and you can go ahead immediately because the time is running short, and some of them are traveling. Yeah. So thank you can straight away go ahead and. Thank you so much. Thank you so much, sir, for the opportunity. So without wasting much time, I hand over it to Sudarshan. Sudarshan, you can take over from here. Thank you so much, Solomon. Thank you, everybody, for taking out your valuable time and joining us. My name is Sudarshan. I take care of the NRI vertical. And अगर सबको आसान रहेगा तो मैं हिंदी में भी बात कर सकता हूँ, जैसे भी आपका मर्जी। तो पहली बात ये बताना चाह रहा हूँ कि NRIs, पहले मैं हमारा कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा। हमारा कंपनी का नाम है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। We are there in the insurance industry from the year 2001. So we are there for the past 21 years, right? And when you look at insurance, there are two major things that you should consider.
पहला चीज ये है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो, और दूसरा चीज होता है सॉल्वेंसी मार्जिन। ये दोनों चीज एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये है कि अगर हम 100 पॉलिसी दे रहे हैं तो इनमें से कितने लोगों को हम, अगर कुछ हो जाएगा तो क्लेम सेटल कर रहे हैं। वो परसेंटेज है हमारा 99.34%, विच इज द हाईएस्ट इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ये पहला चीज है। दूसरा चीज है सॉल्वेंसी रेशियो। सो सॉल्वेंसी रेशियो ये होता है कि IRDAI जो गवर्निंग बॉडी इंश्योरेंस का इंडिया में, वो बताते हैं कि अगर हम कस्टमर को अगर 1 करोड़ का पॉलिसी दे रहे हैं तो हमारे बैंक में 1.5 करोड़ होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 2.02 करोड़ है। So our solvency ratio is 202%. So for every 1 crore we give, we have 2.02 crores in our bank. So इससे ये भी पता चलता है कि हम बहुत फाइनेंशियली स्टेबल भी है एज अ कंपनी। ठीक है, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, सो यही है हमारे कंपनी के बारे में, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। और NRIs के लिए क्या स्पेशल है हमारे पास? पहला चीज ये है कि आप अगर इंडिया में है तो ऑब्वियसली हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप इंडिया में होना चाहिए। यू कैन बी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप कुवैत में हो सकते हैं, आप US में हो सकते हैं, UK में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको हमारे साथ इन्वेस्ट करना है तो ऑनलाइन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके रजिस्टर ईमेल आईडी के द्वारा आप मेल भेज के पूरा डॉक्यूमेंटेशन वो सब आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ये पहला एडवांटेज है जो बहुत सारे कंपनीज के पास नहीं है, जो हमारे पास है। दूसरा चीज, जब भी फॉरेन जो NRIs हमारे साथ बात करते हैं वो ये पूछते हैं कि पैसे वापस लेके जाना बहुत मुश्किल है। हमारे पास इसी कारण हमें ऐसे सदुपाय दिया है जहां अगर आपको प्रीमियम पे करना है, मतलब आपका पैसा भरना है, तो आपके खुद का कुवैत के अकाउंट से या US के अकाउंट से, जो भी अकाउंट है वो अकाउंट से आप पैसे हमको भेज सकते हैं, और वापस जब हम आपको हम पैसे देना चाहिए तब हम रिटर्न भी आपके फॉरेन बैंक अकाउंट में दे देंगे। तो आपको ये चिंता करने का जरूरत नहीं है कि मेरे पैसा मुझे मिलेगा तो कौन से अकाउंट में मिलेगा, इसका चिंता ना होनी चाहिए आपको। इसीलिए आपके फॉरेन अकाउंट में मिल जाएगा। ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज, अगर मैं या सोलोमन या सरीदा अगर 1 लाख का फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी ले रहे हैं तो 4,500 एक्स्ट्रा टैक्स हम लोगों को भरना पड़ेगा क्योंकि हम इंडियंस हैं। लेकिन आपको, क्योंकि आप NRIs है और फॉरेन का पैसे इंडिया में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए टैक्स वेवर भी आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 लाख पे करेंगे तो आपको 22,500 डिस्काउंट मिलेगा टैक्स के रूप में। ये आपको हर साल मिलेगा, एंड दिस इज अ रूल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तीसरा चीज है। और द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको रिटर्न्स अच्छा मिलना चाहिए, है ना। आप जिसी भी देश में हो, जिस देश में आपको जितना भी रिटर्न्स मिलेगा उससे ज्यादा आपको इंडिया में मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आपके शहर में आप देख लीजिए आपका कितना FD का इंटरेस्ट है उससे ज्यादा हमारा गारंटीड प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है।
मतलब इंटरेस्ट मतलब रिटर्न्स की बात कर रहा हूं. सो हमारा गारंटीड प्रोडक्ट का रिटर्न ऑन एन एवरेज 6% है. आप चेक कर सकते हैं फॉरेन किसी भी देश में एफडी रेट्स 6% नहीं है. ये पहली बात है. दूसरा है कि अगर आपको सहमत है कि आप थोड़ा रिस्क लेना चाहेंगे, आपको इक्विटी में आपका पैसा डाल सकते हैं, तो आपको इंडिया में 13% रिटर्न मिलेगा. सो फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट किए हमारे साथ, तो अगला ईयर आपको 1,13,000 हो जाएगा. सिंपल मैथ्स में बता रहा हूं. ओके. और ये इक्विटी रिटर्न्स जो है, इट इज द बेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड. In the US, it is only 7%. In the UK, it is only 6%. In Singapore, it is only 8%. But in India, it is 13.1%. क्योंकि जो भी देश के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो सब डेवलप्ड कंट्रीज है. इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्री है. सो अच्छा रिटर्न्स मिलने का आपको बहुत बहुत चांसेस हाई है. तो ये 4 चीजें हैं क्यों एनआरआई हमारे साथ इन्वेस्ट करना है. अगर आपको कोई सवाल है और जो भी मैंने बताया आपको इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. Yeah, Mr. Sudarshan, thank you very much. So you mentioned the second point, I think second or third point, कि जो होगा वो टैक्स नहीं होगा और प्लस कुछ वेवर भी मिलेगा. Correct. So for example, if we have a long-term policy, say for 15 or 20, and currently our status is NRI, but and that in due course of time we might shift to India, after 5-6 years. Okay. Then our status change from NRI to the Indian residents. So in that case, the policy which we started as an NRI will continue as an NRI with the same benefit, or we have to again change to that, being Indian residents. Yeah. So fantastic question, sir. I'm glad you asked this. So as long as you are an NRI, you will be able to take advantage of the tax waiver. When you come back to India, we would request you to let us know that you have become a resident Indian. Then we will mention that Mr. Prakash Das has become an Indian and he is not eligible for a GST waiver. Okay. So that Clear. is how it works. Clear. And the last part which you mentioned, the last point, which is the equity based. Correct. So, but not guaranteed, right? It's NAV based, right? It will not be guaranteed, right? It is not guaranteed. It is not guaranteed, but I can tell you something. For the last 10 years, we have been giving 13.1. Okay. So there have been years where we were giving 10, but there have also been years where we've been giving 18. So on an average, you can be rest assured that you will get 13, even during the worst market conditions. Okay. So I had spoken earlier, I think Mr. Vishwanath and I think Madam Sarda also had spoken once, that here we have a group of people who are in group actually. We have people who are well paid, and also we have a class of people who are, like a labor class or, that kind of class. So we want also something for them. We are thinking that how we can help them to have a policy where they can get something for their children in future, for daughter marriage, for, the son educations, those kind of things. And we have a number of such people actually, who takes the guidance from us actually. So we want to help them financially also in this aspect. So we wanted to know something, if you can provide something in this, specifically for this kind of group. Yeah. So we have a number of people actually here. Okay. Prakash sir, my suggestion here for the segment of people you're talking about, if you have a list of people that you want to support, if we can have the list of people and how much are they comfortable to pay per year. Okay. And the next column should be what are they wanting to save this money for. Like, for example, some people might want for retirement. Some people want for, child marriage, so on and so forth, whatever the reason.
If Okay. these 3 columns you can fill and probably email it to Sarita, Okay, fine. he will suggest a plan accordingly. We will take Solomon's expertise and Sarita's inputs and all of that, and we Okay. will create what plan will be best based on how much they can invest and what their goal is. Very good, very good. We can certainly do that. So can I get a format? Mr. Rajshekhar can send me the format, exactly what you're looking for, the name, then their what is they're willing to, how much they can invest, right, per year. Correct. And then the tenure also, right, after how long what they want a mature amount. Correct. For what purpose. Okay, fine. Correct. We'll do that. We'll do that. That's very good, actually. That'll be helpful. Here, one question: is there any age factor? How it works for the different age factors? So the below 60 is what the age is, sir. But we have plans which we can give from 60 to 65, but it might not fulfill all kind of goals. Till 60, we support all kind of goals. Above 60 to 65, we can only provide retirement. Okay. So this is the constraint. That amount, the Premium. money which we have to pay to you will differ based on the age group. Sir, we are totally comfortable with whatever they are, willing to pay. What is asking for the premium? The premium will vary, right? It will vary based on the age group. Correct. Correct. It will vary. Of course, if somebody wants to retire early, they might have to put in a little higher amount, so on and so forth. That is certainly there, sir. Yeah. Okay. So you have and this installment, I mean, the amount which is to be paid, that can be tailor-made monthly or quarterly or 6 monthly. That can be done, right? Yeah. That can The first year alone, we request you to pay it annually because we have to allocate it to that particular person. The bond needs to come out on their name and all of that. After that, you can choose to take it monthly or quarterly as per their convenience. And sir, in case somebody on certain circumstance, if they cannot continue it, so what will be in that stage, how they will be just the company, what way they will help them, what will be the response of the company? Yes. So I'll give you an example, sir. So let's say I take a policy where I have to pay for 5 years. Yeah. Okay. Let's say, for easy example, let's say I pay 1 lakh. I have to pay 1 lakh for 5 years. Yeah, every year. Every year, correct. Yeah. So after 2 years, I'm not able to pay. Yeah. Right. So whatever benefits I will get for 2 lakhs will be paid out to me in the 10th year. Ideally, I have to pay for 5 years, 5 lakhs. In the 10th year, I'll get 10 lakhs. But because I paid only 2 lakhs, I will get 4 lakhs in the 10th year. So it is pro rata. Okay. So it will be decided in such a way that I paid, only 2 lakhs and I will get 4 lakhs. So the policy will be still on, right? It will be still on, but I have to wait for the 10 years. Correct. Okay, fine. Yashimandra Prabhuji, any other question, Prabhu? Prabhuji, immediately, I think these are like then if we are continuing, then we can further. We'll make that table, Prabhuji, and we'll provide them, and then we'll get different policies and different returns. Yes. So and then we can. It's very good. Yes. Very nice. Yes. Thank you, Mr. Sudarshan, Mr. Sulaiman, and Madam. Thank you for your time. I know it's very late in India because here it is now 8:30. So, but for you, probably it's 11 o'clock, right? It's 11 p.m. Yes, sir. Yes, So, it is 11 p.m. sir. Thank you so much for your time. As Sudarshan mentioned, NRIs have a lot of benefits by investing in India. All the 4 benefits, whatever Sudarshan told, you can invest from your foreign account, you can take back the money in your foreign account, you have a GST waiver, and of course, policy features, as he mentioned, is huge.
So we will send you a format as you requested, and Sure. from there we will take it forward. And we are strong in two things, sir. We cover two major risks. One, dying too early, and the second biggest risk what today we are facing is living too long. So that is the two risks which we cover majorly, and maybe we will give you a literature on that also, so that we can then take it forward. Thank you so much for your time, sir. Thank you so much. For the pandemic now, because now we just had this corona. So any specific, there is any specific favor for such kind of pandemic if happens, in future? Yeah, see, this COVID has taught us many things, and most of us have now become very clear that we need to have a life cover. And the good news is, Max Life, during COVID, whatever claims has come, not even one single claim we have declined, sir. Whether it is a 50 lakh sum assured or a 5 crore sum assured, we have paid all the sum assureds, and that's why our name has become more and more better than what it was 3 years back. So that's our strength, and we have all our policies are covering COVID. Excellent. And as you mentioned, if we have an NRE account, so we'll be paying from an NRE account, and our matured amount can also be deposited. Yeah. Yes. That's called the repatriation benefit, which is available with Max Life. Okay, fine. It's very clear now. Okay, fine. So we'll wait for the format, and then we'll fill the name and everything, and we'll provide to you. And we'll wait for the different options. Thank you so much, sir. Thank you for your time. Thank you. Thank you. Thanks for your valuable time, sir. Thank you, sir. Thank you, team. Thank you for the intro given, and we'll wait for. Thank you, Prabhuji. Thank you for the support you have given to us, and we have been waiting for long for this. You are very nicely, kindly, and given us this opportunity. Thank you very much, Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mr. Solomon. Thank you. Sarita, and the NRI executive. Thank you very much, and we'll get the details and forward it to you. Thank you. Thank you. Good night. Thank you, Prabhuji. So we can end now, Prabhu. Yeah. Yes, Prabhu. Thank you. Hare Krishna.